Great, we are good to start. All right. So, hello, good evening, everyone. I am Revati, and joining me is Supriya. We welcome you all to the Lead with Art session. मैं रेवती हूँ और मैं और सुप्रिया आपका लीड विद आर्ट सेशन में स्वागत करते हैं. You must have heard the word युवा before. It is a Hindi word meaning youth. युवा शब्द आप सबने पहले सुना होगा. युवा is the Indian chapter of Generation Unlimited, an initiative led by UNICEF and range partners including UGC, other government bodies, private sector, civil society organization, UN agencies, and most importantly, young people. युवा जनरेशन अनलिमिटेड का भारतीय चैप्टर है और यूजीसी, गवर्नमेंट बॉडीज, प्राइवेट सेक्टर, यूएन एजेंसीज और ऑर्गेनाइजेशंस और युवाओं के साथ वो काम करते हैं. युवा aims to connect young people in India to aspirational socio-economic opportunities, relevant skills for life and livelihood, and engage them as active change makers. Working in association with UNICEF is SlamOutLoud. SlamOutLoud UNICEF और युवा के साथ काम करता है. SlamOutLoud. SlamOutLoud is a for-mission non-profit that uses the transformative power of performance art and visual art to build creative confidence, which is a combination of 21st century and socio-emotional skills. SlamOutLoud एक for-mission non-profit है जो creative confidence बनाने में मदद करने के लिए performance और visual arts जैसे कहानी, कविता का उपयोग करता है और 21st century skills और socio-emotional skills का combination है. YuWaah and SlamOutLoud together would help you learn an art form that will help you be better informed, get inspired, and prepare to take action. YuWaah और SlamOutLoud एक साथ आपको एक आर्ट फॉर्म सीखने में मदद करेंगे जिससे आप इंस्पायर हो और एक्शन लेने के लिए तैयार हो और बेहतर इन्फॉर्म्ड हो. So through this engaging storytelling workshop, SlamOutLoud will take you on a journey of reflection and exploration of your strengths to advocate for change. इस स्टोरी टेलिंग वर्कशॉप के माध्यम से SlamOutLoud आपको चेंज लाने के लिए और अपनी ताकत को खोजने के लिए एक जर्नी पे ले जाएगा. Wouldn't it be great if we could use art to feel empowered and be the catalyst of change? That is what this session is for. So let us begin on a journey of exploration and learning through art. To make this session a fun and engaging space, we will practice some norms. हम इस सेशन को फन और एंगेजिंग बनाने के लिए कुछ नॉर्म्स का उपयोग करेंगे. We will ensure that we listen to each other respectfully. हम एक दूसरे को ध्यान से सुनेंगे. Since this session is for you to explore your social impact journey, your participation matters the most. आपका पार्टिसिपेशन बहुत मायने रखता है, तो हमारे साथ एंगेज करें, आपके रिस्पॉन्सेस शेयर करें. We are excited to receive the wonderful artworks that you craft during this session. आप इस सेशन में जो आर्टवर्क्स बनाने वाले हैं वो देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड है. So let's create a safe space for learning, and with this we will begin with the session. इसके साथ हम आज का सेशन शुरू करेंगे. So there are a lot of people who have joined us today, and I'm sure all of you have joined us from different parts of India. आज हमारे साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं भारत के अलग अलग लोकेशन से, पार्ट से. तो let's do a quick fun activity to see where we all have joined from today. Let us locate ourselves on a map to see the different locations from where we are attending today's session. I'm sharing the link for the map in the chat. हम मैप पर अपने लोकेशंस को पिन करेंगे और देखेंगे कि हम सब आज कहाँ से जुड़े हुए हैं. मैं चैट में मैप की लिंक शेयर कर रही हूँ. Once you click on the link, you will see a map and a pink plus sign. And once pink plus sign on the top right corner. Once you click the sign, you can pin yourself. आप जब उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको ऊपर के दाएं कोने पर एक पिंक प्लस साइन और मैप दिखाई देगा. उस पर क्लिक करके आपको पिन कर सकते हैं.
In case you're unable to access the link, feel free to type out your locations in the chat. अगर आप link access नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आप chat में भी type करके हमें बता सकते हैं आप कहाँ से join कर रहे हैं. Okay, all of you can see the map here. We have someone joining from Mumbai, New Delhi, Lucknow. Okay. Now we have even more people we can see here. There's Hyderabad. And wow, it's wonderful to see all of you joining from different parts of India today. आप मैप में देख सकते हैं हम अलग-अलग पार्ट से जॉइन हुए हैं आज के सेशन के लिए. So after like looking at this map filled with locations, I thought of how even during tough times, how many of us have shown courage and are here and have united for our desire to learn. तो इस मैप को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि इस कठिन समय में भी हम अपनी सीखने की इच्छा के लिए एक साथ आए हुए हैं. So I want to know what was your first thought when you first looked at this map and saw all of you guys joining us here today. Please feel free to share your responses with us on chat. आपके दिमाग में सबसे पहले क्या विचार आया जब आपने इस मैप को देखा अलग-अलग लोकेशंस के साथ? आप चैट पर अपना रिस्पॉन्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं. Yes, of course. We've come from different places, backgrounds, and experiences. We've come together here. Sure, it'll be interesting to see how all of that unfolds in today's session. So, thank you all for sharing your responses and joining us right now. And with this, let's get started with our session. So, first of all, we'll be engaging in a centering exercise. हम एक centering exercise के साथ आज के session की शुरुआत करेंगे. I'm sure all of you have been change makers, guiding people, supporting each other, engaging in action to bring about change, helping people. आप सब बदलाव ला रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं और आप साहस और आशा से भरे हुए हैं. Courage and hope makes things a little better. To quote Bren Brown here, every time we choose courage, we make everyone around us a little better and the world a little braver. हम जब साहस चुनते हैं तो हम अपने आसपास के सभी लोगों को थोड़ा बेहतर बनाते हैं और दुनिया को थोड़ा बहादुर बनाते हैं. So, thinking of that, would you want to relive some moments of your life where and explore times where you have been courageous and brave? क्या आप
अपने लाइफ में से ऐसे कोई मोमेंट्स को फिर से जीना चाहेंगे जब आपने हिम्मत दिखाई हो, आशा दिखाई हो? So with that, we'll start with the centering exercise. हम centering exercise की शुरुआत करेंगे. I would like all of you to sit with your back straight in a comfortable position. Close your eyes and breathe in deeply and breathe out slowly. आप अपनी आँखें बंद करें और गहरी साँसें लें धीरे-धीरे अंदर और बाहर. So breathe in and breathe out. सांस अंदर लें और बाहर छोड़ें. As you are taking deep breaths, I would like you all to ask yourselves, आप जैसे सांस अंदर और बाहर ले रहे हैं, तो अपने आप से पूछिए कि when have I shown courage? When have I been brave? When have I given hope to others? मैंने कब साहस दिखाया है? मैं कब बहादुर हुआ हूँ? और मैंने दूसरों को कब आशा दी है? And today I want you all to think of those moments where you feel that you have dared greatly. आज मैं चाहती हूँ कि आप उन मोमेंट्स के बारे में सोचिए जब आपको लगता है कि आपने बहुत हिम्मत दिखाई हो. It could be big moments, small moments. It could be something where you pushed yourself to try something new. It could be where you've been hopeful about something and you've displayed courage. Could be anything. Like, for example, a moment that I am thinking of is when I got elected to the student council. And I had never been one of those people who would, take part in like extracurriculars and engage a lot. But that opportunity sort of pushed me out of my comfort zone and helped me realize the skills I had. And instead, like I was very nervous, but I chose to be hopeful and try something that I hadn't done before. मुझे ऐसा लगा कि मैं कर पाऊँगी या नहीं क्योंकि मैंने ऐसा पहले कभी किया नहीं था. फिर भी I tried और मैंने कोशिश की and that opportunity helped me sort of realize my potential. So keep breathing in and out as you create what such a moment is for you and keep these moments in your mind. आप सांसें अंदर और बाहर लेते रहे और इन मोमेंट्स के बारे में सोचें. So once you have the moments ready, you can slowly open your eyes. आप अपनी आँखें धीरे-धीरे खोल सकते हैं, आपके पास जब मोमेंट्स रेडी हो तो. And since your courage and hope are an inspiration for me, I would like to know more about it. मुझे आपकी मोमेंट्स के बारे में अ, मैं आपके मोमेंट्स के बारे में जानना चाहती हूँ. प्लीज़ हमारे साथ आपकी मोमेंट्स को शेयर करें. So I hope that all of us are, inspired by these moments that we have visualized, and we can use them in our session today to learn and celebrate. मुझे उम्मीद है कि आप इस मोमेंट से इंस्पायर हुए हो और आप इन आज के सेशन में इसका उपयोग करके सीखें और सेशन एन्जॉय करें.
With this, I will now hand it over to Supriya. She'll take us through our main segment for today's session. It was really great. Thank you, Revati. It was really great to know about your moments of courage and hope. And so now, with this sense of courage and hope, we would like to deep dive into our main art activity. मुझे आपके मोमेंट्स ऑफ करेज और होप के बारे में जान के बहुत अच्छा लगा, और इसी होप और करेज के साथ हम आप आज अपनी मेन आर्ट एक्टिविटी करेंगे, जिसमें हम लोग अपने लिए एक पोस्ट कार्ड बनाएंगे. We will be creating a postcard for our future selves. इस आर्ट एक्टिविटी में हम अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए पोस्ट कार्ड लिखेंगे. So for this, we will be needing a few resources such as pencil or a pen, a sheet of paper. If you have an A4 size sheet of paper, you can use that. And if you do not have, do not worry, you can use any other sheet of paper. And you can use colors as well as eraser. So इस आर्ट एक्टिविटी के लिए हमें कुछ रिसोर्सेज चाहिए, जैसे कि पेन और पेंसिल, शीट ऑफ पेपर, A4 साइज शीट आप यूज कर सकते हैं. अगर वो अवेलेबल नहीं है तो आप कोई और भी पेज, कोई और भी शीट यूज कर सकते हैं, कुछ कलर्स और इरेजर. एंड वंस यू रेडी विद दीज रिसोर्सेज, प्लीज टाइप इट इन द चैट बॉक्स एंड लेट मी नो. आपने जब ये रिसोर्सेज कलेक्ट कर लिए हो, आप प्लीज चैट बॉक्स में शेयर कीजिए कि आप रेडी हैं. All right. So I think, yeah, most of you are ready. So let us just begin with the activity. And before that, let me ask you a question. उससे पहले जिस सेशन को स्टार्ट करने से पहले, एक्टिविटी को स्टार्ट करने से पहले, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी. एंड दैट इज, have you ever like seen a postcard or sent a postcard to somebody or received a postcard from anyone? If yes, then you can type it in the chat box. अगर आपने कभी भी किसी को पोस्ट कार्ड भेजा है या फिर रिसीव किया है या फिर आपने पोस्ट कार्ड देखा है, तो आप चैट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं. Okay, so I see that somebody has, sent a postcard to their brother on his birthday. That's nice and sweet. Okay, so we have people who haven't shared postcard, but they love collecting postcard. That is fun thing to do, I think. लोगों को पोस्ट कार्ड्स कलेक्ट करना भी अच्छा लगता है. मुझे लगता है ये बहुत मजेदार बात है. Okay, so I see that there are people who know what a postcard is and have seen or sent or received. So let us start. So before that, I'll let you know that a postcard is a thick, double-sided card. Postcard एक thick, double-sided card है, on which you write a message in the back side. In the back side, you write the message, and in the front side, you draw or paste any picture. It can be a favorite picture that you have, or you can just draw whatever you like to on the front side. It looks something like this. So on the front side, you draw a picture. आप फ्रंट साइड पे कोई भी पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं अपनी फेवरेट पिक्चर. And at the back side, on the back side, you write a message and details of person the post you're sending the postcard to. तो आप बैक साइड पे वो एक मैसेज लिखते हैं और डिटेल्स लिखते हैं उस इंसान की जिसको आप पोस्ट कार्ड भेजना चाहते हैं. If you have any questions about this, what postcard is, you can share it in the chat. अगर आपको कोई इसमें डाउट है कि पोस्ट कार्ड क्या है तो आप शेयर कर सकते हैं. चलिए वो हम शुरू करते हैं. We will start now. So what you have to do is you have a sheet of paper, and usually a postcard is half the size of A4 sheet. So what we have to do is we have to just fold the sheet into two halves. जो हमारा पोस्ट कार्ड होता है वो A4 साइज शीट के हाफ होता है, तो इसलिए हम अपने जो पोस्ट कार्ड है हमारा उसको हम ऐसे लैंडस्केप पोजीशन में रखेंगे, लैंडस्केप या फिर हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, एंड वी विल फोल्ड इट इनटू टू हाफ्स.
We will keep the postcard into in a landscape position and fold it into two halves like this. And once you're done doing that, what we have to do is we have to draw a vertical line in the center of the two halves. जब आपने इसको टू हाफ्स में फोल्ड कर दिया है तब आपको एक सेंटर में वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है सीधी. And once you're done with that, what we have to do is on the right side of the vertical line in the center, you have to draw 8 horizontal lines. And on the left side of the vertical line in the center, you have to draw 4 horizontal lines. जब आपने वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली है सेंटर में, उसके बाद उसके राइट साइड में आपको 8 हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करनी है और उसके लेफ्ट साइड में आपको 4 हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करनी है. प्लीज टेक सम टाइम एंड ड्रॉ दीज लाइंस. एंड वंस यू आर रेडी लेट मी नो. जब आपने ये लाइंस ड्रॉ take some time and just draw these lines. Let me know once you're ready. All right. So now that we have a postcard ready, we have drawn lines. अब जब हमने lines draw कर लिया, हमारे पास postcard है. अब हम क्या करेंगे? So we will just close our eyes and think about all those moments, all those situations when we have felt proud of ourselves, when we have shown courage or just made a mistake and owned up to that mistake and changed it and just accepted it. We can think about all the moments when we stepped out of our comfort zone and did something that we were always afraid of. तो अब जब हमारे पास हमारे पोस्ट कार्ड रेडी है, हमने लाइंस ड्रॉ कर ली है, हमें अपनी आंखें बंद करनी है और उन सब मोमेंट्स के बारे में, उन सब सिचुएशंस के बारे में सोचना है जब हमने कोई चैलेंज फेस किया है, जब हमने करेज शो किया है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके कोई कदम उठाया है, कोई काम किया है जिससे हम हमेशा डरते थे, या फिर हमने कोई अपनी गलती को स्वीकारा है और उसको बदला है ताकि हम ग्रो कर सकें. आप किसी भी चीज के बारे में सोच सकते हैं जिससे आप प्राउड फील करते हो, उनके बारे में भी सोच सकते हैं, उन सब चीजों के बारे में. प्लीज क्लोज योर आईज एंड थिंक अबाउट सच मोमेंट्स, सच सिचुएशंस. Take some time and think about all these moments. I will give you an example. So I used to be this underconfident and shy student who never went in front of a class and used to be always quiet and never performed anything or never shared much. But once I wrote a poem and then I showed it to my teacher, and then they asked me, to come for a session and perform the poem. And I was so afraid because I had never performed before. But then I stepped out of my comfort zone. I showed courage and I went for the session. And then for the first time, I was standing in front of a mic and there were random stranger people, like I had never met them. And then I performed in front of them. And I think that was such a great moment for me because I did something I was always afraid of. And it was a moment to remember. And now I really love being on stage and performing. तो जब मैं ऐसे क्लास में कभी भी मतलब शेयर नहीं करती थी कुछ भी, और कोई भी मतलब परफॉर्मेंस मैंने नहीं किया, लेकिन एक बार मैंने एक पोम लिखी और फिर मैंने अपने टीचर को दिखाया, तो उन्होंने मुझसे बोला कि मैं एक सेशन के लिए आऊं जहाँ पे मैं वो अपनी कविता सुनाऊंगी. तो मैंने ऐसे अनजान लोगों के सामने माइक के सामने खड़े होकर अपनी पोम परफॉर्म की
और वो मेरे लिए एक बहुत ही करेजियस मोमेंट था, क्योंकि मैंने अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके कुछ किया था। और अब मुझे स्टेज पे रहना, वहाँ पे परफॉर्म करना लोगों के सामने बहुत अच्छा लगता है। तो आप भी कुछ मोमेंट्स के बारे में सोच सकते हैं जब आपने ऐसा कुछ किया हो जिस पे आपको प्राउड फील होता हो, जिस जो आपके लिए बहुत ही एक करेजियस मोमेंट रहा हो। आप इन सब मोमेंट्स के बारे में सोच सकते हैं। And once you're done, you can slowly open your eyes. Think about it, all those moments, and then you can open your eyes slowly. All right. So now that we have thought of all these moments of courage and moments when we have felt proud, and all these challenges and mistakes and strengths that we have. So what we have to do now is that just we have to do is that draw or draw a picture on the front side of the postcard. So we have the front side where we have not drawn any lines. Here we have to draw a picture or any symbols that that depicts your strength or the situation that you thought about, situation when you're proud of. You can think about all those symbols. In case you are unable to draw, you can visualize these symbols and share with us in the chat box. I'll repeat again. अभी हमें क्या करना है कि हमें जो हमारा फ्रंट साइड है पोस्ट कार्ड का, उस पे हमें वो सब सिंबल्स और पिक्चर्स ड्रॉ करने हैं जो हमारे करेज को, जो हमारे स्ट्रेंथ्स को, हमारी सिचुएशन को जब हम प्राउड फील कर रहे थे उनको डिपिक्ट करता है, वैसी कोई भी सिंबल्स हमें ड्रॉ करनी है। मैं आपको एग्जांपल दूंगी। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। सो फॉर मी, when I went on the stage and I performed, so for me, a mic and a stage and audience, it really, they really, symbolize courage for me, and that is a depiction of courage for me. मेरे लिए एक माइक और स्टेज और ऑडियंस सिंबल है करेज का। तो you can also think about such a moment, like such symbols, and then draw them. आप भी ऐसे सिंबल्स के बारे में सोच सकते हैं जो आपके स्ट्रेंथ को और आपकी सिचुएशन को सिंबलाइज करता है, और आप ड्रॉ कर सकते हैं फ्रंट साइड पे जहाँ पे आपने कोई भी लाइंस नहीं बनाई है। टेक सम टाइम एंड ड्रॉ. In case you are not able to draw, you can just visualize and share. Let me know once you're done drawing the symbols. You can take some more time and draw.
All right. Okay. So it's okay if some of you are still drawing and haven't been able to complete. You can complete it after the session. Now we will move on to the next step. अगर आप अपनी ड्राइंग्स कंप्लीट नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, आप सेशन के बाद उन्हें कंप्लीट कर सकते हैं. अब हम अगले स्टेप पे मूव करते हैं. Now what we have to do is, now that we have a postcard and we have drawn symbols that depict our strengths and our moments of courage and moments when we felt proud of ourselves, what we will do now is write a message for our future self, your future self from 1 month later. अब जब हमारे पास अपने पोस्ट कार्ड्स हैं और हमने ड्रॉ भी कर लिया है, तो अब हम अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए 1 महीने के बाद के फ्यूचर सेल्फ के लिए एक मैसेज लिखेंगे अपने पोस्ट कार्ड पे. सो यू ऑल ड्रू 8 horizontal lines here on the back side of the postcard. Here, now you have to do is think about what you want to talk to your future self about. What any advice that you want to give to your future self, anything that you're proud of and you want to talk about that, or if you want to talk about any qualities or strengths that you think your future self can leverage to bring about change, or just talk if you want to share like a vision for the future 1 month later and what you want to achieve over a journey of 1 month. You can write a message about that, and you can use these forms, or else if you want to write about something very different, you can do that as well and just write whatever message you want to for your future self. यहाँ पे जो आपने 8 हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ किए, यहाँ पे अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए आपको मैसेज लिखना है. आप उन मोमेंट्स के बारे में लिख सकते हैं जिस जब आप प्राउड फील कर रहे थे, या फिर आप कोई एडवाइस दे सकते हैं अपने फ्यूचर सेल्फ को, या फिर अपने क्वालिटीज और स्ट्रेंथ्स के बारे में बात कर सकते हैं जो कि आपको लगता है कि आपके फ्यूचर सेल्फ यूज कर सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं, चेंजेस ला सकते हैं. या फिर आप, अगर आपके पास कोई अभी अचीव करने के लिए कोई गोल है 1 महीने में, तो आप उसके बारे में भी बात कर सकते हैं. इन सब के अलावा अगर आपको किसी और चीज के बारे में मैसेज लिखना है अपने फ्यूचर सेल्फ को, आप वो भी कर सकते हैं. सो टेक सम टाइम and write the message to your future self here where you've drawn 8 horizontal lines. आपके पास कुछ टाइम है, आप अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए मैसेज लिख सकते हैं जहाँ पे आपने 8 horizontal lines बनाई है. You have some time and let me know once you're ready. जब आपने लिख लिया मैसेज, आप मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं. Till then, I'll share an example with you that a message that I wrote for my future self. So I'm soon going to get into college and start my college journey, and I'm really excited about college. So I wrote to my future self that I'll just read out the message that yes, Supriya, you are in your college finally, because 1 month later I'll be in my college. It is another home to you, and you have friends who will be there for you always. Please be open to new learnings, experiences, and people. Accept your emotions and take care of your heart. You will have great times there that you will cherish for life. Remember to be kind and patient and have fun. तो अभी मैं 1 महीने बाद कॉलेज में होंगी, और इसलिए मैंने अपने फ्यूचर सेल्फ को लिखा कि अब फाइनली मैं कॉलेज में हूँ और वहाँ पे मेरे फ्रेंड्स कुछ ऑलरेडी हैं और मेरे फ्रेंड्स होंगे मेरे साथ, तो वो मेरे लिए घर की जैसा ही होगा. और मैंने लिखा है कि मुझे ओपन रहना चाहिए न्यू एक्सपीरियंसेस के लिए, न्यू लर्निंग्स के लिए और नए लोगों के लिए. और मुझे अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करना है, कोई भी इमोशंस हो, कैसे भी इमोशंस हो, और अपने हार्ट की केयर करनी है और अपनी इमोशंस की केयर करनी है. और मैं वहाँ पे बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करूँगी जो कि मुझे हमेशा अपनी लाइफ में याद रहेगा और जिससे मुझे हमेशा खुशी मिलेगी. और कुछ भी हो जाए, मुझे काइंड और पेशेंट होना नहीं भूलना चाहिए और मज़े भी करने चाहिए कॉलेज में. तो मैंने ये मैसेज लिखा अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए. You all can write whatever message you want to for your future self, just like I did. आप अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए कोई मैसेज लिख सकते हैं
जैसे मैंने अभी आपको बताया अपने मैसेज के बारे में. Take some time and write, and let me know once you are ready. Take 2 to 3 minutes, and then you can write your message. Okay, take another minute. Those of you who are done writing, जिसने भी लिख लिया है, you can share in the chat box how you're feeling after writing the message and creating the postcard for yourself, for your future self. जिन लोगों ने भी लिख लिया है मैसेज, वो चैट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं कि उनको कैसा फील हो रहा है ये एक्टिविटी करने के बाद. अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए एक पोस्ट कार्ड लिखने के बाद आपको कैसा फील हो रहा है, आप चैट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं. So we have people sharing that it was wonderful, they felt wonderful, and they never thought that they could write a postcard to themselves, and it was also a good reflection activity for them. That's nice to hear. Yes, it is a nice reflection activity where we can, think about ourselves, our vision for future, our strengths, and how we want to see ourselves in future. So that's great. Okay, so it was wonderful to know that you all feel good after writing this message. Now, what we are going to do is we all will be creating a sharing space where we will be sharing the postcard that we have written. But before that, you have to do one more thing, and that is so if you that if you're sending a postcard to someone, you have to write the details of the person you're sending the postcard to. आप जब पोस्ट कार्ड भेजते हैं तो आपको उन लोग की डिटेल उस इंसान की डिटेल लिखनी होती है जिसको आप पोस्ट कार्ड भेज रहे हैं. So in this case, you're writing the postcard to yourself. So you will be filling in details of yourself. You will have to write your name, city, state, and country. Just like I have written Supriya, New Delhi, India. आपको अपने खुद
खुद की डिटेल्स फिल करनी है। आपको अपना नाम, सिटी, स्टेट और कंट्री लिखना है। जैसे मैंने लिखा है सुप्रिया इन न्यू दिल्ली, इंडिया। Please fill in the details. Take a few moments and take some time and then fill in the details and let me know once you're ready. And for those of you who are unable to write, you can just record a voice a message for your future self. It's okay if you were unable to write. You can just record a postcard for yourself. That will be nice. All right. So now we will move on to the next part where we will be sharing our messages and our postcard with everybody. And due to limited time, not every one of us would be able to share. Uh, that's why we'll be taking a few responses. And what we have to do is you have to unmute yourself, and if you're comfortable and if it's possible, please also switch on your camera so that we can see your postcards. And if you are ready, you can share your name in the chat box so that we can call you for sharing. अभी हम लोग अपने पोस्ट कार्ड शेयर करेंगे। अगर आप कंफर्टेबल हैं और पॉसिबल है तो आप अगर आप रेडी है तो आप चैट बॉक्स में अपना नाम लिख सकते हैं ताकि हम आपको बुलाए शेयर करने के लिए। और लिमिटेड टाइम है इसलिए हम सब शेयर नहीं कर पाएंगे, तो कुछ लोग शेयर कर पाएंगे। Let me know whoever wants to share, and you can type your name in the chat box. We can call you for sharing. You can also type the message that you've written for yourself in the chat box. And when everybody is sharing, what the rest of us can do is we can just write messages on the in the chat box to appreciate them, to share if we feel connected to the message that they've written, or we can just motivate them and encourage them to share. That will be a nice supporting and lively space that we create. जब हम में से कोई शेयर कर रहा है तो बाकी हम सब लोग चैट बॉक्स पे यूज करके उनको मोटिवेट कर सकते हैं, उनको अप्रिशिएट कर सकते हैं। अगर उनके मैसेज से हमें कनेक्टेड हो रहा है तो हम वो भी शेयर कर सकते हैं। इस तरीके से हम एक सपोर्टिव और लाइवली स्पेस क्रिएट कर पाएंगे। तो अगर जिसको भी शेयर करना है, they can type their name in the chat box. Please let us know whoever wants to share. Okay, so we will ask Revati to share her message with us. Yes. So here's what my drawings are. This is like for the happiness. This is about the people I love, and it's about learning new things. And the message that I have written for myself for 1 month after is I'm proud of you for not giving up and staying strong, even when that's all you could think of. I hope you continue taking ownership and accountability. And I hope you keep creating and taking on new challenges. And a message that I've written is always stay stubborn and resilient and take in small joys, indulge in breathers and breaks every once in a while, and appreciate the people you love. That's the message that I read. Thank you for sharing, Revati. It was great to listen to you. And yes, indeed, it is important for us to take challenges so that we grow. And it was a lovely message that you wrote for your future self. So thank you for sharing. Yes. And the pictures were also cute.
All right. For the rest of you, if you want to share, you can also type in the chat box your messages for your future self. We would love to read them. And because everybody cannot share, what we can do is we'll be sharing a link in the chat box, and there you can share your postcards, and we'll be able to see, and then it will be happy, like we'll be happy to see and read your messages. So you can post them there in the link that we'll share in the chat box. All right. It was amazing doing this activity with you, and it felt great to reflect about our strengths, our vision, and just write a postcard for our future self. It was a great activity, and I hope you keep doing such gestures of courage and love for yourself, and keep exploring yourself, as well as keep being connected with yourself through such activities. And now I would love to call Revati for the next segment. Yes. So, with this, we've come to the end of today's activity. I hope you all enjoyed writing a postcard to your future selves and feel motivated to be catalysts of change. Uh, आप सभी को पोस्टकार्ड लिखकर मैं आशा करती हूँ आप सभी को मजा आया और आप इंस्पायर हुए हो एंड थैंक यू फॉर एक्सप्रेसिंग सो ब्यूटिफुली आपने कुछ नया ट्राई किया इतने इतना आपके जो आर्ट वर्क्स है वो हम देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हैं and while some participants could share their responses, we cannot wait to see all of your artworks. So when you submit your artworks on the link, do not forget to write your name. Your artwork could be featured on Slam Out Loud social media channels such as Instagram, Facebook, and Twitter. Follow us on social media and keep an eye out for your artwork. आपकी आर्टवर्क हमारी सोशल मीडिया चैनल्स पर शेयर की जा सकती है तो हमें फॉलो करें. Did you enjoy the activity today? It was a great experience for us to host this for you. And in case you'd like to try such activities, you can visit the DIY playlist that Slam Out Loud has on YouTube, or you can access such activities through our website as well. And you can even text us on WhatsApp to receive the activities. आप YouTube पर DIY प्लेलिस्ट से या फिर हमारी वेबसाइट से एक्टिविटीज एक्सेस कर सकते हैं या फिर हमें WhatsApp पर मैसेज भेज के भी you can access the activities. So before you go, we'd like you to leave with 2 thoughts from Slam Out Loud. आज जाने से पहले हम आपको Slam Out Loud के 2 विचारों के साथ छोड़ना चाहेंगे. So how can I leverage my strengths in my social impact journey? मैं अपनी social impact journey के लिए अपनी ताकत का लाभ कैसे उठा सकती हूँ? What can I do every day to bring about change? बदलाव लाने के लिए हर दिन मैं क्या कर सकती हूँ? So we hope you had a great time engaging and learning through art and you enjoyed and we learned a lot from you. हमने आपसे बहुत कुछ सीखा और हमने आज आर्ट के थ्रू बहुत कुछ सीखा. And even though we have come towards the end, please send in your artworks. We are looking forward to seeing what all you have created. And we look forward to engaging with you guys. So spread your magic and thank you for joining today's Lead with Art session with us. All the links for our social media as well as the submission link for your artworks